Hello friends, welcome back to UPSC_Ethics and Integrity Online. Be your dream. आज के लेक्चर 21 में हम एक नए मॉरल थिंकर के बारे में जानकारी लेंगे. We will have a discussion on a new thinker which is Rabindranath Tagore. We will see what are the basis for him deciding an act to be unethical or not. हम देखेंगे कि वो क्या बेसिस रखते हैं कि एक एक्ट एथिकल है या नहीं है उनके हिसाब से. और उसके पहले follow us on Instagram, Facebook, Telegram for your free Hindu paper, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notification. So without wasting your time, let's start. Rabindranath Tagore. He was literally a genius and a poet and an artist. Yes, because Rabindranath Tagore ने 3 देशों का नेशनल सॉन्ग लिखा है, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. एंड ही वॉज अ फ्री थिंकर, मतलब वो रिलीजन में नहीं मानते थे. वो सोचते थे कि हमारी सोच एक लिमिटेड बाउंड्री में ना होके हर जगह के बारे में सोचे. ही वॉज बेसिकली अ सीकर ऑफ नॉलेज, नॉट बाउंडेड बाय रिलीजन और एनी एक्ट और एनी ट्रेडिशन. ओके. He considered religion as a means to unite the infinite and considered men's religion as innermost truth. Means it was the basis. He considered truth with truthfulness. Be truthful to yourself and to others. That he considered as the main religion. And religion should not divide. It should unite people. That's the reason he was against formal religion, and he accepted or he believed that any religion or any act which unites people should be followed, and that should be men's religion. मतलब एक ह्यूमन बीइंग का रिलीजन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को साथ में लेके चले या साथ में यूनाइट करे. He said the goal of religion is to express and cultivate those qualities which are inherent in human nature. वो सोचते थे कि ये इनहेरेंट है बट हम भूल गए हैं ये फॉर्मेलिटी की वजह से. इस वजह से ये हमारा किसी का भी गोल होना चाहिए कि ये एक्सप्रेस कर पाए और उसको कल्टिवेट, जो रिलीजन करता है, जो ह्यूमन नेचर को बाहर निकालता है, वही फॉलो किया जाए. ठीक है. उनकी पॉलिटिकल व्यू के बारे में देखते हैं. उनके लिए पॉलिटिक्स एक नो गेम हिसाब से था. वो एरिया में वो घुसना नहीं चाहते थे. वो हर वक्त डेमोक्रेटिक राइट और फ्रीडम के बारे में लड़ते थे. फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू एक्ट, एंड लोगों की शक्ति में ज़्यादा बिलीव करते थे. और वो सोचते थे कि अगर आपको राइट पाना है तो एक कंस्ट्रक्टिंग सफरिंग करना पड़ेगा आपको. जैसे कि गांधी जी का जो चीज़ था, जैसे वो सत्याग्रह करते थे, दैट वाज द कंस्ट्रक्टिव सफरिंग. जैसे कि आप पॉल कोएल्हो का एक कोट है, पेन ऑफ वेस्टेड इज द स्ट्रेंथ ऑफ टुडे. यस, अगर आज आपने कंस्ट्रक्टिव सफरिंग किया तो ये बाद में वो स्ट्रेंथ, एक सत्याग्रही जो महात्मा गांधी बोलते थे, उसमें वो डेवलप्ड हो जाएगा. यू विल बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. And he always, as I said, stood for freedom and autonomy. And he thought freedom was an antidote to mechanical convention, arbitrariness, prejudice and narrow social creed. मतलब ये जो चीज चल रहा था, जैसे कि हमें इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है, उसमें कोई फ्रीडम नहीं है सोच के. इट इज लाइक डूइंग मैकेनिकल वर्क. तो he thought that freedom is an antidote to that. If you have freedom of thinking, freedom of learning, freedom to do anything you want, and reasoning out that act, then it will shatter all these things, shatter all the negativities from the society. And further he says that freedom will actually lead to you to self-actualized, leading to creativity. What is meant by self-actualization? Means knowing yourself more and being more creative with respect to your talent. Okay. Next is nation state and society. He was obviously he had a very passionate love for India, and he refused by the dictates of nation state. Means he didn't believe in any nation state. He believed nation state as a super being.
where the power is so much concentrated into one institution that it can take over everyone's freedom. So he said that society should play a very important role in deciding its future, and for any new social construction, society should be at the center, not the nation state. So he was same as Mahatma Gandhi's view. Mahatma Gandhi has been inspired by from Rabindranath Tagore, and he considers society at the center. Education. He considered Western education as mechanical and soulless because he thought that our education is focused as from outside also, and it also focus inside our thing. In the sense, we consider our body and our soul with respect to while giving education. मतलब आप देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन या जो भी ओरिएंटल एजुकेशन है वो ज़्यादा करके बॉडी को भी देता है उतना ही इम्पोर्टेंस, और आपके अंदर जो आत्मा है उसको भी देता है. एंड ही वांटेड कि जो भी एजुकेशन हो मदर टंग में हो और नेचुरल सेटिंग्स में हो, जो कि सोशल टेक्सचर जो उधर का एरिया है उसके हिसाब से. उसके हिसाब से हो, सो दैट वो आराम से ग्रैप्स हो पाए एजुकेशन उन स्टूडेंट्स में, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए. मदर टंग में होगा तो उनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा दूसरे लैंग्वेज अपने दिमाग के अंदर, और वो आराम से समझ पाएंगे. और फ्री एटमोसफियर होगा, ऑब्वियसली नेचुरल सेटिंग में होगा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड मोर स्टूडेंट कैन बी अकोमोडेटेड. एंड येस, जो भी तकलीफ होगा या जो भी चीज़ होता है, एक फ्री सेटिंग वाले से गुरुकुल सिस्टम, जहाँ की बच्चे जाके रहते भी हैं गुरु के साथ एंड गुरु माता के साथ, एंड वहीं सब कुछ सीखते हैं. बी इट द किंग चाइल्ड और अ पुअर चाइल्ड, एवरीवन इज थॉट एट द सेम लेवल, एंड जिसके पास टैलेंट होगा वो आगे बढ़ जाता है. तो इस हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर वांटेड द एजुकेशन सिस्टम टू बी इन इंडिया, ऐसे कि पहले था. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम ऐसा करें आज के ज़माने में तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड thank you for watching. If you have any suggestions or any doubts, please let us know. We'll be very happy to help you, and be blessed. Thank you very much.